Hello everyone, welcome to our online class. Today we will discuss about SS specifier in Java. As earlier we have discussed about the major components of OOP, that is the object-oriented programming, and the major component of which are the classes, object, data members, methods, and as well as SS specifier. This SS specifier basically controls the accessibility of members in the same class or other class or within a same package or with other packages. It is used to set access level for classes, variables, methods, and constructor. तो गोटे क्लास भितर जेन मेंबर मैंने अछन जेन डेटा मेंबर अछन से डेटा मेंबर रो एक्सेसिबिलिटी माने के मेंबर और के वेरिएबल के वैल्यू के एक्सेस करि पारबे तो से एक्सेसिबिलिटी रो रीच गोटे वैल्यू जदि गोटे क्लास भितर स्टोर होई छे से क्लास रो वैल्यू के केन मोमेंट रे एक्सेस करि पारबे से जिनिस में डिसाइड करसी एक्सेस स्पेसिफायर all the access specifier are keywords. As we have earlier discussed that in Java there are 50 numbers of keywords, and the SS specifier are also keywords, and thereby should be written in lowercase letters. So as we are learning about Java programming language, that Java offers 4 types of SS specifier, and that are public, protected, default, and private. So before going to the SS specifier, let's discuss about the package. Agro discuss करें class and object. An object is instance of a class which is capable of holding the actual data, and class is a collection of similar type of object. Likewise, packages are a group of related interfaces and classes that provide a convenient mechanism for managing a large set of interfaces and classes. Collection of object के हमें class कोई करना तो संख्या package अभी these are nothing but group of related classes. Conveniently, the package की use करा जाए करवा से related similar type of classes के और collection के हमें package कोई करना. जनता class के define करवा लगी class नहीं. To declare a class, you have to use class keyword. Likewise, to use a package, you need to import it into your program by using the import statement. तो जितना भी पैकेज के हमारे सोर्स कोड है हमारे प्रोग्राम से इंक्लूड करवा के चाहना तो सना गोटे कीवर्ड यूज करना इंपोर्ट और से स्टेटमेंट लिखना से स्टेटमेंट की वजह से इंपोर्ट स्टेटमेंट जिन जगह import इंपोर्ट कीवर्ड का हम यूज करछू. फॉर एग्जांपल हियर इंपोर्ट java.lang.start. Java.lang is a default package generally which is already available to the user. By default Java package अच्छे java.lang package, that is a language package. और बारे आउट के एग्जांपल अच्छे package रहो java.applet, java.util for utility, java.io that is for input output, and we can use user defined packages as well. तो Java रो inbuilt अच्छे java.applet, java.util बारे हमें user defined जिन पैकेज यूजर नीचे डिफाइन किए दैट वन इज यूजर डिफाइंड पैकेज. कैन आल्सो create a user defined package. So now let's come to the SS specifier. The first one is public SS specifier. So when a class member is declared as public, it means this member can be accessed anywhere, that is in any class of any package. मैं SS specifier स्टार्टिंग में देखते हैं कि SS specifier माने होचे जे मेंबर होचे से मेंबर रो एक्सेसिबिलिटी के तक होचे से किन जगह रो वैल्यू यूज कर पाए. तो जेते बेले गुटे क्लास मेंबर के पब्लिक वैल्यू हमें डिक्लेयर करू छु इट मींस दिस मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर से वैल्यू का थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी जगह रो एक्सेस कर ले पाए इनसाइड एनी क्लास ऑफ एनी पैकेज किसी भी पैकेज रो किसी भी क्लास विथ हम के एक्सेस कर पाए. And Java source code can only contain one public class.
where name must also match with the file name. As we know about the main class काहे कुहाଯାଏ जेन क्लास रो अंडर रे मेन मेथड यूज हेसी बिकॉज सोर्स कोड रो जावा सोर्स कोड रो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का स्टार्ट हेसी मेन मेथड आ मेन मेथड जेन क्लास भितर छै से क्लास के कुहाଯାए मेन क्लास तो जेन मेन क्लास अछि ताके हमें पब्लिक क्लास क्रिएट करे पर ताके पब्लिक हमें डिक्लेयर करे तो जब से क्लास के मैं पब्लिक डिक्लेयर करू छु सो जहाँ किसी भी वैल्यू अच्छे थ्रू आउट द प्रोग्राम किसी भी जगह ताके एक्सेस कर दे पर but the trick here is the name must also match with the file name class name of file name का exactly same however and to declare the class and its member as public use the public keyword public as specifier use करवा लगी जिन keyword to use है that one is public public but it should be in lowercase letter as it is a keyword. The next one is protected. Member of a class declared with protected as a specifier can be accessed within the same class and its subclasses within the same package or in other packages. We'll go into detail about the subclass and superclasses. जितने बेले गोटे क्लास का अंडर रे आ गोटे क्लास क्रिएट होचे सेनु किछि वैल्यू से कंसीडर नहीं करी से क्लास टा क्रिएट होचे ताके सब क्लास को आ जाए ओके we'll discuss it in the inheritance section but protected बुझबार लगी हमें देखना जति गोटे डेटा मेंबर के हमें जति प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करू तार accessibility कार भीतर रहिबा within the same class and its subclasses गोटे क्लास भीतर अदर सब क्लास जहाँ अछि सबकी भीतर ही से एक्सेस करिबा within the same package or in other package अलग पैकेज बट सेम क्लास भीतर ही सेटा यूज ही करबा कथा चलो हम प्रोटेक्टेड रो कथा होछु से अदर पैकेज रे यूज नहीं and to declare the member as protected we use protected keyword janta public lagi public keyword is which is under protected lagi protected keyword and if you want to access the protected members outside the package we'll have to extend this class using extends keyword because protected hame देखना same class other subclass but other packages है ताकि यूज ना करे जाय पारे तो जो भी हमें चाहूं से अलग पैकेज दउछे but if you want to access protected members outside the package गोटे पैकेज रो बाहर जदि हम ताकि यूज करबा के चाहू छु तो वी हैव टू यूज एक्सटेंड दिस क्लास यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड एटा होचे इनहेरिटेंस रो कांसेप्ट हमें ऐसे स्पेसिफायर करे जतले इनहेरिटेंस यूज में एक्सटेंड और सब क्लास में जहां पे फीचर है सेटा डिटेल बने देन द नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट प्राइवेट public or protected like protected or public keyword use करा होचे समता डिफॉल्ट like किसी keyword use करा हुए because default means जेतबेला हमें किसी भी specifier नहीं डिक्लेयर करबा whenever we do not specify any specifier at all then such a class or method or field will be accessible within the class or other classes within the same package which is called default और accessibility का default केतबेले कहा गला जति हमें किसी भी ऐसे स्पेसिफायर मेंशन नहीं करबा तो ताकि कहा जाय डिफॉल्ट अदर एक्सेसिबिलिटी किनो रहता it will be accessible within the class and other classes within the same package ओके पैकेज है मित्र बस पैकेज रो अंडर इन क्लास आसपा तो सेम पैकेज रो कितना जेन क्लास होचे और सेम पैकेज रो अलग क्लासेस ले भी यूज करबा डिफरेंट पैकेज and it is also known as package level access specifier because the classes of the same package only are allowed to access the members of the class. Certain classes because there may be a number of classes inside a package. So same package रे गुटे package भितर जतटा भी class अछि सब class गुटे member रो value के access करि पारे जदि default access specifier अछि and default access specifier means if you are not specified any three of the access specifier public private or protected then the last one is private
So member of a private class, a member of a class declared with private SS specifier accessed only within the class in which they are declared. Most restricted SS specifier होची private. ଯଦି ଆମେ କେନ୍ସି କ୍ଲାସ୍ର ମେମ୍ବର୍ସ କି କ୍ଲାସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ ତ ସେ ଏସ୍ ସ୍ପେସିଫାୟାର କାଣା ହେଲା ସେ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ମେମ୍ବର ଅଛି ତାର ଏସେସିବିଲିଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବା ୱିଦିନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେନସନ୍ କରୁଛୁ ତ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ତାକେ ଏସେସ୍ କରିପାରମା। କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ପଲାମା କ୍ଲାସ୍ର ବାହାରେ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଏସେସ୍ ନାଇଁ କରିପାରୁ। These members are not available for subclass or any other packages. To declare the member private, use the keyword private. But remember, a class cannot be declared as private. When the public out protected है, हमें कीवर्ड यूज करी परछन संता गोटे क्लास के हमें प्राइवेट बोली डिक्लेयर नहीं करू। बट से क्लास भितर जे मेंबर्स अच्छे से मेंबर्स मानके हमें प्राइवेट डिक्लेयर करि परबा। दिस इज द पॉइंट। So here we can clearly see the accessibility of different type of SS specifier. But in the SS section, the parameters are tick marked. It means public is accessible to the classes, subclasses, packages, and other packages as well. But in case of protected, it can be used within the class, subclass, packages, but cannot be accessible to other packages. The most restricted one is the private SS specifier, where it is only accessible within the class. It cannot be accessed by the subclasses, packages, or other packages. Default package is somewhat similar to protected, where the value cannot be accessible to other packages, but it can be accessible to the classes, subclasses, and packages. Here we do not have to mention any keyword to the class if we are mentioning it as default SS specifier. Thank you.